Okay, let me share the screen. Okay. Okay, कल हमने किया था कुछ results regarding this second fundamental form. तो जो कि तुम्हें पता है एक differential quadratic differential form है. What was that? That was it is just L du square plus m du dv plus n dv square. And of course, L and N are numbers that are evaluated at a point by a certain formula. If you know the equation of the surface, that आपकी surface की equation ये है. Then you can find L by this unit vector N R sub u and M accordingly. That is N dot R sub e and this N is N dot RVV. And but this is also equal to minus N sub u dot RU, and this is equal to minus N sub u dot RV, and this is equal to minus N sub v dot RV. तो ये हमने कल किया था इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स. तो हम एक और चीज देख सकते हैं कि अब यू हैव टू रिमेंबर, इसको हम बहुत आगे यूटिलाइज करेंगे कि दिस इज माय सरफेस, राइट, that lives inside R3 patch of the surface. So essentially this is my, so let me move this. Now think of this as this is my patch of the surface in this three-dimensional space, and by definition it is some kind of smooth mapping from an open set U, and this U is contained in a plane, in UV plane. Let me call it R2, where my variables हैं यहाँ पे एक मतलब एक open set है, right, inside R2, और इसमें U है and V है, right, ये U axis and V axis है. So any point here is a pair UV, and this R maps this to some point R at UV. So this takes it into the R3 space. It's a point in R3. It has an x coordinate, y coordinate, and z coordinate. Now once I change to some point here, right? Suppose मैंने कोई दूसरा point है इसके बाजू में, right? So मतलब यहाँ पे एक दूसरा point है इसी neighborhood में, तो वो कहीं यहाँ पे होगा, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं पे भी हो सकता है. So let's call that U plus du, V plus dv. उसका भी कोई U value होगा, first coordinate, दूसरा coordinate, कोई इसका neighboring point in the domain, in this open set, in this patch, in my domain, and then I get some other point. So जब भी मैं U, V, dv दूंगा, अब obviously कोई दूसरा point लूंगा neighborhood में तो वो कहीं और होगा, तीसरा लूंगा तो वो कहीं और होगा range. It will be mapped to some other point here, some other point here. So what I'm trying to say, जब भी मैं ऐसा करूँगा, it would represent a direction on the surface. So any change in the parameters would result, you know, we will go to some other point on the surface, and that automatically would represent, you know, going in a certain direction on the surface. तो मैं चाहता हूँ इसको तुम याद करो, मतलब इसको याद रखो इस पॉइंट को. लेकिन फर्दर हम करना चाहेंगे वो ये कि suppose now I know that on my surface patch there are some special curves, जिसको मैंने U curves और V curves कहा. एक जो ढांचा जिससे वो surface बनती है, और ये तब जनरेट होती है, ये तब बनती है जब मैं अपने इसको मतलब I just apply my map to मतलब these lines जहाँ पे V constant है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना. ये जो यहाँ पे एक ग्रिड है, मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो इन पे V कांस्टेंट है और U चेंज हो रहा है, और ये जो लाइंस है, ये लाइंस है, मतलब जो मेरा पैच है डोमेन का, जिससे मुझे सरफेस का पैच मिलता है, बिकॉज वो एक प्लेन में लाई करता है. तो अगर मैं U इसको मान लूँ, V इस डायरेक्शन को मान लूँ, सो दीज लाइंस जो है इनमें V कांस्टेंट है. सो ये जो मैप होगी इधर, सो आई विल गेट अ कर्व, जो लाइंस है parallel to my U axis in the domain,
वो यहाँ मैप होगी कुछ कर्व्स पे, उन कर्व्स को हम कहते हैं यू कर्व्स। और जो इस टाइप की लाइंस होगी जहाँ पे v वैरी हो रहा है और u कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स वो भी मैप होगी यहाँ कुछ कर्व्स। तो वो जो सरफेस में मुझे मैप मिलेगा, तो जो ना लाइन जो कर्व्स मिलेगी उनको हम v कर्व्स कहते हैं। और बाय रेगुलरिटी चूंकि मैं कह रहा हूँ, और उनकी जो डायरेक्शन होगी, ऑफ कोर्स they are functions of a single variable, तो उनकी डायरेक्शंस, उनके tangents, डायरेक्शन मतलब उनके tangents की जो डायरेक्शन है at each point, they would be given by, अगर u curve है तो by ru vector, and v curve है तो rv curve, because उनके लिए दूसरा वेरिएबल तो कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ये सरफेस की मैपिंग है। So what I want to find now, अगर मेरे पास ऐसे है, obviously I can find the angle between my u curves and v curves, क्योंकि u curves की डायरेक्शन जो है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो कोई भी दो कर्व्स उनके दरमियान जो एंगल होता है वो वही होता है। मतलब दो कर्व्स अगर इंटरसेक्ट करें कहीं पर भी, तो जब मैं कहता हूँ इनके दरमियान एंगल थीटा, मेरा मतलब होता है वो जो टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल होगा वो कंसिडर होगा, that would be considered to be the angle between those two curves. So I can find the angle between two curves, angle between these parametric curves, would be given by the angle between Ru and Rv, because they are the vectors tangent to my parametric curves at a point. So if omega is the angle between parametric curves on a surface R is equal to R at UV, then omega is the angle between the vector Ru, R sub u, and R sub v at a certain point, so that क्या cos of omega फिर होना चाहिए by the dot product idea R sub u dot R sub v divided by norm of R sub u dot R sub v. That is the definition of the dot product. But this can also be written in terms of my first order fundamental magnitudes. This is f, and this is of course root of e and root of g. So I can write it as f, okay, non-negative numbers, so I can write it as root of eg. Similarly, sine of omega, so it would be the cross product of length of the cross product divided by the length of Ru. It is again the definition of the cross product. And of course, that would be equal to h divided by root of eg. So I can write it in terms of these numbers at a point. And of course, tan omega दोनों को divide कर लो, तो वो हो जाएगा h by f if I want to evaluate. And of course, well, that's obvious. If in a special case, in case parametric curves are orthogonal, of course they are never collinear, but they may or may not be orthogonal. In case they are orthogonal, then of course f is equal to 0, which means cos of omega is equal to 0. या एक ही बात है, f0 या cos omega 0, क्योंकि अगर एंगल 0 है तो cos, मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर ये 0 है, ठीक है, तो f0 है, which means cos of omega is 0, right, which means the angle is 0. मैं क्या नहीं, मतलब angle is 90, sorry, which means omega is equal to 5/2. ना एक ही बात है ना कि orthogonal ये the same thing. Okay, now let's talk about direction coefficients. जो मैंने तुम्हें अभी शुरुआत में बताया था वो basically इसके लिए था, direction coefficients को हम define करें. Now I have a point
on surface. Now at a point on surface there are infinitely many directions. Huh? तो what I'm trying to say, अगर मैं किसी point पे हूँ अपने surface patch पे, इस पे हर तरफ मैं सोच सकता हूँ, किसी भी direction में मैं जा सकता हूँ on that surface. So at a point P on the surface R is equal to RGV, there are three mutually perpendicular या mutually independent vectors. मतलब हर point पे मैं evaluate कर सकता हूँ R sub u और फिर होगा R sub v the direction. Then of course they give rise to a tangent plane. Then I have vector that is tangent, that is the unit vector, which is perpendicular to both RU and RV. So यहाँ पे एक तरह से तीन vectors हैं जो linearly independent, because RU and RV are by definition of the regular point linearly independent, and then this n is perpendicular to both, so it cannot depend upon RU and RV. So there are three independent vectors, independent binding linearly independent vectors. You cannot write one as a linear combination of the others. Independent vectors n, which is the unit normal to the surface, which is of magnitude 1, and Ru, Rv, tangential vectors. So that an arbitrary vector at this point P, ये जो मेरा point P है, an arbitrary vector, अगर मैं कोई भी vector अब इस point पे लूंगा A, किसी भी direction में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, so because this is the basis for R3, an arbitrary vector A at point P can be expressed as a linear combination of the spaces. There are three vectors in three spaces that are linearly independent, so it can act as a basis at that point. So any point that starts at P can be written in terms of N, Ru, and Rv, can be expressed in the form A equal to A sub n times n plus some lambda times Ru plus some mu times R. तो ये तीन स्केलर्स होंगे, मतलब उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे at this point. So let's call this one. अब तो एग्जाम में भी राउंड नहीं कर रहा है इसको. Where of course, इसमें मैंने अलग अलग क्यों किया, ये जो lambda Ru plus mu times Rv है, because it's a combination of क्या बोलते हैं Ru and Rv, तो ये जो मेरा tangent plane था, यहाँ पे एक पॉइंट P था और यहाँ कोई वेक्टर है A, इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ into two components. एक कंपोनेंट है along, मतलब रिजॉल्व मींस प्रोजेक्ट कर सकता हूँ एक हिस्सा इसका n पे और दूसरा हिस्सा इसका मतलब टेंजेंट प्लेन पे. तो ये जो यहाँ टेंजेंट प्लेन पे इसकी प्रोजेक्शन होगी वो होगी सम लैम्डा b टेंजेंट प्लेन है प्लस म्यू टाइम्स rv, और यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन होगा यानी ये जो वेक्टर होगा ये होगा an times n along this direction projection और plane में जो projection. तो मैं इस पे फोकस करूंगा ज्यादा, ये जो इसका tangential component है. Now where is the tangential component of this vector? Tangential component, a tangential part of A, and an lambda mu are scalars defined uniquely by 1, because if we
So what we do, हम इसको लिखेंगे, इसको जो tangential component है इस वेक्टर का, इसको हम लिखेंगे by this p वेक्टर. तो अगर मैं इसका नाम ये देता हूँ, तो मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा, एक tangential component और normal component. I can do it always because it's a basis. Mu rb. Now lambda mu are direct, what I'm saying, are components of the tangential vector, are components of the tangential vector, or rather the tangential component of the vector A. So we write them as lambda mu. मतलब ये हमारा रूटीन है ना, जैसे अगर हम R2 में है उसकी बेसिस में लेता हूँ, सपोज E1 एंड E2, ये इसकी बेसिस है R2 की. So फिर जो कोई नंबर होता है 3, 2, वो बेसिकली होता है 3 टाइम्स E1 प्लस 2 टाइम्स E2, यानी this is actually 3 into 1 0 plus 2 into 0 1. इसकी बेसिस है. तो जब भी कोई बेसिस हो, इस तरह का वेक्टर हो बेसिस में, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. वंस द बेसिस इज नोन, तो हम उसको ऐसे पेयर लिख सकते हैं. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को हम इस तरह से लिखेंगे. एंड वी हैव, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी जस्ट द लेंथ, इसकी लेंथ जो होगी दैट विल बी ऑब्वियसली लैम्डा आर यू प्लस म्यू टाइम्स आर वी. एंड इफ यू इवैल्यूएट देम, दिस इज नथिंग बट v times lambda square plus twice f times lambda mu plus g times mu square whole raised to 1/2. तो ये होगा अपना tangential component of any vector at any point on a surface, and E, F, G are the first order fundamental magnitude. इसको कुछ नहीं करना, स्क्वायर करना, फिर डॉट रख लेना है, तो ये मिलेगा, फिर वापस स्क्वायर रूट लिया तो you get this. The scalar जो कि हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, the scalar an is called the normal component of it. That's obvious. It would be the projection of A in the normal direction. Normal component of A, and is given by an is equal to the dot product of this vector with n, because it is unit vector. Now we are in a place to give to define the direction coefficients at a point on the surface. Now what we do now, ये जो lambda mu है इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं. ये जो टेंजेंशियल वेक्टर है उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, हम लेते हैं उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे, सो दैट इट बिकम्स ऑफ, हमें डायरेक्शन से मतलब है ना कि उसके मैग्नीट्यूड से. तो हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं उसका बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स नॉर्म. तो ऑफ कोर्स इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, है ना, उसके कंपोनेंट्स होंगे बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ t डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ t. वो होंगे बेसिकली लैम्डा डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ t, कॉमा म्यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ t. तो इसका नाम हम देते हैं l और इसका नाम देते हैं हम m, और इन्हीं का नाम है डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो वही मैं लिखूंगा. नाउ टू डिस्क्राइब, ये थोड़ा नंबर छोटा मैं लिख रहा हूँ, the direction in the tangent plane at point P, it is, we use the components of the vector, of the unit vector E, उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, unit vector E से in the direction of t.
डायरेक्शन ऑफ t, यानी मेरे कहने का मतलब है ये यहाँ हमने e लिया वेक्टर t डिवाइड बाय its length. Okay, these components, the components, the components of e are written as L, M. तो by that ही ध्यान में रखना है, it's with respect to the basis R U R V, यानी E vector जो है मेरा वो actually है this vector basis को, with respect to this basis. Okay, and are called, ये थोड़ा मैंने डिटेल डेफिनेशन दी इसको, मैं चाहता हूँ क्लियर थोड़ा हो जाए. Direction coefficients at P. Direction coefficients of a vector of direction at P. And of course इसका जो length का square होगा क्योंकि वो 1 है, it would be equal to of course L RU plus M RE. फिर से हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वगैरह वगैरह, तो वो बन जाएगा E times L square plus twice F times LM plus GM square. And of course it is equal to 1 क्योंकि इसकी length 1 है. And therefore when LM direction coefficients at a point, then EL square plus twice FLM plus GM square is equal to 1. Okay, now what we want to get at by this, we want to, अगर मेरे पास कोई surface है ना, not surface, I should think of this. अगर मैं कोई surface लेता हूँ तो वहां पे किसी पॉइंट पे tangent plane है, ठीक है ना. Now what I do, अब मेरे पास एक, मतलब जब भी मैं इसका जो डोमेन है मेरा यूवी प्लेन, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे किसी डायरेक्शन में जाऊँ तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ना उसका प्रोजेक्ट करूंगा मैं पर्सपेक्टिव को, ऑफ कोर्स सरफेस कर्व होगी. तो मेरा जो इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन है तो मैं उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट लूंगा, फिर उसको नॉर्मलाइज करूंगा, फिर वो मेरा वेक्टर होगा यहाँ पे E. तो ये तो T था पहला, फिर मैंने उसको मतलब नॉर्मलाइज किया, उसको उसके नॉर्म से डिवाइड किया, आई गेट अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इन दिस टेंजेंट प्लेन, तो जिसके कंपोनेंट्स का नाम मैंने दिया LM. So now what we do, suppose I've got two directions. मैं यहाँ गया फिर दूसरे पॉइंट में यहाँ गया, तो अकॉर्डिंगली मेरा जो रेंज होगा मतलब that would be plotted, these points would be plotted in some other direction on the surface. तो उनका again मैंने tangential component दिया in this tangent plane, and I want to find what would be the angle between these two directions, मतलब which means between the vectors जो यहाँ ये tangential components हैं, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो उसको मैं मानूंगा ये जो कर्व्ड सरफेस में जहाँ ये दो डायरेक्शंस हमें मिली उनके दरमियान कौन सा एंगल होगा. सो आइडिया बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो हम यूज करेंगे अपना, मान लो ये E1 एक का नाम E2 दूसरे का नाम चलो E'2, तो अगर उनके दरमियान डायरेक्शंस के दरमियान एंगल है थीटा, तो वो होगा वेक्टर्स के दरमियान एंगल, और देन यूज द डॉट प्रोडक्ट. So the angle now let लिख देता हूँ the angle between two directions at a point on the surface. Now let the direction coefficients of two directions at a point P
बी, मान लो दो डायरेक्शन है, एक के डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स lm है, दूसरे की है l प्राइम m प्राइम respectively, and vector E and vector E prime be the corresponding unit vectors that is, by that I mean that E is equal to L times RU plus M times R sub V, and E prime is equal to L prime times RU plus M prime times RV. Then of course, cos of theta is simply using the vector unit vectors level. It would be E dot E prime, so that would be L R U plus M R V dot product with L prime R U plus M prime R V, and if you do the dot product, it will be just E L L prime plus M times F times M L M prime L plus L prime M plus G into M prime. And similarly, sine of theta would be just the cross product E cross की length, again चूंकि इनकी length 1 है, वरना हमें उसे divide करना होगा, जो तुम evaluate कर सकते हो, जो मैं तुम पे छोड़ूंगा, cross product दोनों vectors का, it will be just L M prime minus M L prime times H, but do it yourself, ये जरा evaluate करना है यहाँ, and of course tan theta दोनों को divide कर लो तो हो जाएगा. Now any numbers lambda mu जो हमने originally उस tangential vector के components लिए थे, now they are called direction ratios. Now they are just proportional to Lm, are called direction ratios. Now that's obvious. ये वैसे तुम lower classes में भी करते हो ना, वो direction cosines and direction ratios. अगर तुम कोई vector रहते हो, अगर इस direction में कोई भी vector को हम direction ratios कहते हैं इस direction के, और अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, अगर हम उसको नॉर्मलाइज कहते हैं, तब हम उनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं. यहाँ पर डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स कहते हैं उनको, और इनको ऑफ कोर्स डायरेक्शन रेशियोज ही कहते हैं. एनीवेज, सो कुछ हम इससे डिड्यूस कर सकते हैं कोरोलरी, वो ये कि मान लो दो डायरेक्शंस में कोरोलरी, इफ द एंगल, if theta is equal to pi by 2, then cos of theta is equal to 0, which would imply that the condition for orthogonality, then the direction ratio, directions Lm and L prime M prime are orthogonal, and the condition for orthogonality would be in terms of first order fundamental magnitudes, and the condition for orthogonality will be cos theta का जो वैल्यू मैंने निकाला था वो था E L L prime plus F L M prime plus M L prime times F plus G and M prime should be equal to 0. And of course, अगर हमें direction, we can reduce this condition to direction ratios also, and if I've got, instead of direction cosines, I've got direction ratios. So if lambda m and lambda prime mu prime are the direction ratios, in that case, इनके ज़्यादा फर्क नहीं होगा, we get the same condition. फर्क नहीं चाहिए, क्योंकि it would be lambda prime plus f times lambda mu prime plus mu lambda prime times
g times mu prime depending upon हमारे पास वेरिएबल ऐसा कुछ है. ओके, बट अब एक और corollary है, वो क्या? Now we know something, we know two particular directions जो हमारी special directions हैं on a surface, right? वो है parametric directions. तो parametric directions एक तो है खुद RU, दूसरा है खुद RV. So we have, हम लिख सकते हैं RU को equal to 1 into RU plus 0 into RV. इसी तरह से हम RV को लिख सकते हैं 0 times RU plus 1 times RV. So hence there are also two directions, special directions. Hence components of these two directions इनके L's और M's जो है are 1 0 and 0 1 respectively, and these are direction ratios for the parametric curves. पहला वाला होगा v equal to constant यानी u curve and u equal to constant respectively. आज हम definitions ही कर रहे हैं, but they are important definitions. And the direction coefficients होंगे, इनको इनके magnitude से divide कर लो. And direction coefficients are 1 by root e आ जाएगा वो एक में, और दूसरा आ जाएगा 0. ओके, ना इस पे हम एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मान लो अगर हमें एक के पता है डायरेक्शन रेशियोज तो और दूसरा उसके ऑर्थोगोनल है, तो हम उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय दीस फॉर्मूलास. मेरे कहने का मतलब है अगर मैं ऐसे एक्सरसाइज ही करूं, फाइंड द डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स making an angle pi by 2 with the direction coefficients. हमें ये गिवन है, हमें दूसरा में निकालना है, लेकिन कंडीशन है कि वो ऑर्थोगोनल है उसके. On a surface R is equal to R to V. तो हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, उससे हम निकाल सकते हैं. ये let L prime M prime be the required direction coefficients. So if theta, या ये लिख सकते हैं. So since pi by 2 is the angle between these directions, between the direction LM and L prime M prime, we get cos of pi by 2, which is equal to, जो कि 0 है, और ये cos किसके बराबर है, E L L prime plus F L M prime plus M L prime plus G M M prime, यानी 0 होगा. और साथ में इसका जो साइन थीटा होगा, इसको हम थोड़ा पहले, एंड ऑफ कोर्स इसका जो साइन थीटा 1 है और साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1, और वो बराबर होता है h into L M prime minus M L prime. तो ये दो इक्वेशन समझ लेंगे, तो इसकी मदद से हम L prime M prime को निकाल सकते हैं. तो पहले से हमें मिलेगा, so that from first हमें मिलेगा
हमें L प्राइम और M प्राइम निकालना है, तो हम इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। यानी पहला हमें मिलेगा L प्राइम के साथ आएगा EL, और यहाँ से मिलेगा FM प्लस FM plus M prime into FL plus GM is equal to 0. So you want to go from first equation, that is here. From first equation, and if we use the cross multiplication method, so I must have L prime divided by FL plus GM. मतलब या दोनों साइड्स को यहाँ ले लो, FL plus GM, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको इस साइड पे लेंगे, must be equal to minus M prime divided by EL plus FM, which is equal to say A. मान लो ये रेशियो दोनों बराबर है और A के बराबर है, बट फ्रॉम सेकेंड अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, देखो क्योंकि L प्राइम होगा ना A इंटू दिस थिंग, और M प्राइम होगा EL plus FM into A, उसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, so but from second equation I get from equation, yeah, second equation, क्योंकि मैंने इनको नाम नहीं दिया, देना चाहिए था वैसे, I will get HAL into EL plus FM plus HAM into FL plus GM is equal to 1, or I will get 1 by A, इसको यहाँ ले जाऊंगा, is equal to H into calculate करके EL square plus twice FLM plus GM square, लेकिन चूंकि यूनिट वेक्टर है LN and the bases are in RV, this is equal to 1, यानी 1 by A is equal to H, since EL square plus twice FLM plus GM square is equal to 1. So therefore मैं इसको बैक सब्स्टिट्यूट करूंगा A की जगह, तो मुझे मिलेगा L prime is equal to FL plus GM divided by H, and M prime होगा बराबर minus EL plus FM divided by H. So this is, अगर मुझे पहले वाले पता है और ये फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स में इवैल्यूएट करूंगा, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल डायरेक्शन होगी ऑन द टैंजेंट प्लेन, तो मुझे पता लग सकता है। ओके, तो आज हमने काफी सारी डेफिनेशंस की। ओके, नाउ फर्दर, हाउ अबाउट दिस, तो मान लो मेरे पास अब कोई भी दो डायरेक्शंस हैं, कोई भी दो कर्व्स है ऑन सरफेस जहां के हम आना चाहते थे, तो ये तो हुआ, हमने पहले सोचा कि कोई भी डायरेक्शन है। नाउ आवर डायरेक्शन वुड बी गिवन बाय अ कर्व ऑन अ सरफेस। मेरे कहने का मतलब है, तो मेरी डायरेक्शन वुड बी, मतलब मैं कोई कर्व ली यहाँ पे, नॉट नेसेसरली पैरामीट्रिक कर्व, उसको दूसरी कर्व ली, कैन आई फाइंड दिस एंगल between, what can be the expression? The objective is to find an expression for the angle between any two curves that lie within a surface and intersect. तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, यानी उनके दरमियान जो टेंजेंट्स बनेंगे, उस जगह जो उनके टेंजेंट्स होंगे उनके दरमियान एंगल क्या होगा। सो वो अपना है नेक्स्ट, एक तरह से हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। So the angle between, yeah, let me write it as expression for the angle between any two intersecting curves on a surface. Any two intersecting curves on the surface. I think it's okay, now let UV be the point of intersection. Point of intersection
of two curves and dr and this small del r, these vectors, be the displacements, the vector displacements along two curves corresponding to the increments du dv and let's call it del u del v. इनमें कुछ चेंज मतलब फर्क नहीं है यहाँ, क्योंकि मुझे दो चाहिए थे तो मैंने इनका नाम d और ये del से अलग अलग किया. इनका मतलब कुछ नहीं है. This is a small change in u, this is a small change in u, this is a small change in v, this is a small change in v. What I'm trying to say, मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, राइट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं डोमेन में, जो ना यूवी डोमेन है. इट इज मैप्ड टू अ पॉइंट हियर, उसका मैंने माना p. अब जाहिर सी बात है मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूं तो एक कर्व मिलेगी, अब यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हूं तो यहाँ से दूसरी कर्व मिलेगी, राइट. तो उसका मतलब यहाँ मैंने कुछ इंक्रीमेंट दिया होगा, तो यहाँ का इंक्रीमेंट यानी यहाँ पर जो मैंने कहने का मतलब है, ये जरा मैं फिर से प्लेन में ही रखना चाहूंगा. यहाँ पे एक पॉइंट था तो मैं इस डायरेक्शन में गया तो मैंने यहाँ u v था, तो ये जो इंक्रीमेंट दिया मैंने तो ये फिर बन गया u t u प्लस v प्लस टी वी. इसी तरह से मैं दूसरी डायरेक्शन में गया तो इसी प्लेन में, विद इन दिस प्लेन, मेरी डोमेन का जो हिस्सा है जिसकी रेंज या जिसका जो इमेज है ये सरफेस है इन माय R3, तो इसको मैंने कहा u plus del u, v plus del v, मतलब it's just two directions. So correspondingly, तो I would have something like situation like here. यहाँ पे ये पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे और ऑफ कोर्स इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑफ कोर्स ये होगा बेसिकली, एक होगा अपना r at u p, तो ये होगा r at u plus tu v plus tv, और ये वाला दूसरा पॉइंट होगा r evaluated at u plus del v, v plus del. Accordingly, I would have these vectors in these directions. मैं tangents ढूंढना चाहता हूँ, इन वो जो vectors होंगे छोटे छोटे जो in these directions होंगे, वो होंगे, तो मैं लिख देता हूँ so that dr जो मेरा vector होगा, so that would be some, of course they both lie in the tangent plane at that point. So it would be a combination, be du times ru plus dv times rv, और मेरा जो दूसरा वेक्टर होगा, क्योंकि मेरी इंक्रीमेंट्स ये है नीचे, तो इसमें कोई फर्क नहीं. मैं एक्चुअली यूजुअली फॉर्मूला में हम du ही लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दो डिफरेंट डायरेक्शंस दिखानी है, तो मैं d और del में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है. दिस इज स्मॉल चेंज इन वेक्टर r, दिस इज अगेन अ स्मॉल चेंज इन वेक्टर r बट इन अनदर डायरेक्शन. तो इनमें कोई ऐसा फर्क नहीं है, ठीक है. क्योंकि मुझे दो चाहिए थे तो मैंने इनका नाम d के बजाय del रखा, मतलब इनका दोनों का सेम ही है. स्मॉल चेंज इन r, स्मॉल चेंज इन r, स्मॉल चेंज इन u, स्मॉल चेंज इन. तो मैं ये क्लियर कर दूं. चलो यहाँ मैंने, ठीक है, तो इसी तरह से होगा del v into r. तो ये मुझे corresponding vectors मिलेंगे tangent plane में corresponding to the these changes in my parameters in my domain. ओके, सो अब कुछ ज्यादा है नहीं. अब अगर psi है angle between these two curves, it would be the angle between these two vectors dr and del r. So that's what we are going to write. So if psi is the angle between these two curves, between these directions, I should say, so I should have cos of psi equal to dr plus a dot product with del r divided by the length of dr into length of del r. So, but I have this expression for them du ru plus dv rv into इसका है मैंने रखा है del u ru plus del sub v r sub v, of course divided by the length.
मैं इसको लिख सकता हूँ in terms of its fundamental magnitudes by taking the dot product and using the definition of EFG and of EFG. तो उसकी मतलब E is RU dot RV, F is नहीं, E is RU dot RU, F is RU dot RV, and G is RU dot RV, RV dot RV, sorry. तो वो यूज करके मैं निकाल सकता हूँ इसका वैल्यू जो कि बराबर होगा E times du del U plus F times du del V plus dV del U plus G times dV del V, of course divided by, this is just the tiny length जो कि हमें already पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ds into del s, the tiny length in that direction. It is length of the vector, so therefore this is basically, I should have written it like this. This is the same thing as dr and del r. ये same था ना, because it's, I could इसको लिखने की जरूरत नहीं थी basically इधर इस तरह expand करके, because it is just our the length element there, this infinitely small length in that direction. तो वो अगर हम ना लिखते तो भी सही. Okay, so I think I should leave it here. तो इंशाल्लाह कल इसको और कंटिन्यू करेंगे. I hope you are with me right now. Oh, 33 आए हैं आज.